Hello, today we will be doing SBI Clerk 2021 previous year question quant section. Mainly we will be focusing on arithmetic questions, and at the end I will also show you some of the extra questions that are important. Let's start with the first question. Um, let's read it. Ratio between length of trains A and B is 3:5. Speed of train A is 72 km per hour, and then that of train B is 54 km per hour, and they are running opposite to each other. If train A crosses train B in 16 seconds, then find the length of train B. So for this type of question, if you have not understood yet, you can pause and mm, mm, uh, read the question again to understand what it's saying. Before I start solving this question, I want to show the concept of this of of train questions from speed and distance chapter. So let's say this is train A. The concept is that this is train A, and this is train B. If they are coming from the opposite side together, then mm, if train B's velocity is VB and train A's velocity is or speed is uh, let's call me speed. If train B speed is SB and train A's speed is SA, then mm, if they're coming from opposite direction, then relative velocity will add up. So SA plus SB, and if they are going in the same direction, let me use a different color. Let's say this is also going in this direction and train A is also going in this direction. If both are going in the same direction, for that case, relative velocity will be SA minus SB, right? It will get subtracted. So the concept of relative velocity that I want you to understand, that individual, let's focus on when the train are going in the opposite direction. In this case, uh, speed A's alone speed is SA and speed B's alone speed is SB, and they're coming in coming from opposite direction towards each other. In that case, their relative velocity becomes this. So the concept of relative velocity that I want you to understand, that if I give this relative velocity and say that my train A is moving at a speed of SA plus SB, if this is the speed, if this is the speed with which my train A is moving, then train B is standing still, as if it's standing still. SB is 0. It does not have any velocity. It is a stationary object. It does not move. In reality, train A's actual speed is SA and train B's actual speed is SB. But whatever be the relative velocity, I assign that relative velocity, total velocity, or net speed to one of the trains and say that my train A is moving with that relative velocity, then the other train is as if standing still, it's not moving. Same for when they are coming from the same direction. If I say that train B is moving with this speed and assign this speed to train B, even though in reality it is moving with some other speed SB, but this is my net speed or relative speed. If I say that my train B is moving with this relative velocity, if I assign the speed to train B, then it's as if what will happen, that train A is standing still in its position. This is the concept that I want you to remember. Okay, keeping that in mind, let's solve the question. Uh, Speed of train A is 72 km per hour and that of train B is 54 km, and they are running in opposite direction. So relative velocity would be 72 plus 54, that is
126 kilometer per hour. That is my relative speed. And if train A crosses train B in 16 seconds. So let's say this is my train B, and this is the front part where the driver is driving the train going in this direction. This is my train B, and train A crosses train B. And I am saying that this is my train A. It is coming from this direction, and here is the driver of the train A. Uh, so I am saying that this train is carrying a speed of the relative velocity 126 kilometer per hour. That means this is standing still in its position. This train is not moving. This train is not moving. That means if this train is not moving, this is standing in its place, and this train is going at the speed of the relative velocity, that is 126 kilometer per hour, then what does mean that train A crosses train B? This line means that in 16 seconds, these 16 seconds, uh, imagine there is someone outside who has started a clock timer. As soon as the front part of both the trains are meeting together, at this instant someone has started this stopwatch, and once the back part has just barely crossed the back part of train B. Here is my driver of train A. He has driven the train forward enough so that the back of train A is just barely crossed the back of train A, and at this moment that person has stopped the stopwatch. The time that was recorded in this clock was 16 seconds. This is what it means. So that means how much distance, just imagine this driver. So how much distance did this driver cover? The driver cover this distance, length of B, length of train B. The driver of train A has covered this distance of length B, and also in this 16 second the driver has also reached a distance away from train B, which is length of train A away apart, right? In 16 seconds time the driver has covered total how much distance? Length A plus length B. This much distance he has covered with this much speed in time t equal to 16 seconds, right? So we know that speed equal to distance by time. So here distance is LA plus LB. So LA plus LB is equal to, here I have made my train B speed as 0. It is not moving. I have given all the velocity, relative velocity to train A. So the speed is 126 kilometer per hour. To convert this kilometer per hour to meter per second, I'm multiplying with 5/18 times speed into time is 16 second. Make sense? So if I simplify, 18 sevens is 127, 126. So length of LA and length B is 7 into 5, 35 into 16. I'm not calculating this multiplication to save time because I don't need to. You will see now why I don't need to. What we need to find length of train B. We have to find the length of train B. What is the ratio of LA and LB? Is given as 3:5. So LA is to LB is given to us as 3:5. That means length of B would be how much? 5 parts out of 3 plus 5, that is 8 part. 5/8 of the total length LA and LB, LA plus LB, that is 35 into 16.
Dividing 16 by 8 gives me 2. 5 into 2, 10. 10 into 35 is 350 meters. That's my answer. Hopefully this was understandable, and uh, keep a note of this concept. It's an important concept. Let's do the next question. The perimeter of a circle of radius 28 centimeter. Perimeter of a circle of radius 28 centimeter. So 2 pi r means 2 pi into 28 centimeter is 32 centimeter more than perimeter of square. So perimeter of square would be minus 32. So perimeter of circle से मैं अगर 32 घटा लूँगा तब जाके मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा. एंड स्क्वायर का मुझे पता है चारों साइड ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड दिस इज माय पेरीमीटर. सो ईच साइड लेंथ वुड बी डिवाइडेड बाय 4. एंड अगर एक साइड का स्क्वायर का लेंथ ये है, एरिया ऑफ द स्क्वायर वुड बी इसका स्क्वायर. आई जस्ट हैव टू इवैल्यूएट दिस. So 4 will cut 28 7 and 32 with 8. So 2 pi 7 minus 8 whole square. This gives me pi I can write as 22 by 7 into 7 minus 8 whole square. So 7 into 7, 2 into 22 gives me 44. 44 minus 8 whole square. This gives me 36 square. 36 square I can write as 6 to the power 4 or 6 cube into 6. So I know the value of 6 cube is 216. So 216 into 6, 216 into 6, that gives me 1296. 1296. This is my answer. This was very easy. Next question. A boat in upstream can travel 5 kilometers in 30 seconds. Sorry, a boat in upstream can travel 5 kilometers in 30 minutes. That means 1 hour में ये 10 किलोमीटर चला जाएगा. फिर अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा मेरा? अपस्ट्रीम स्पीड है बोट का 10 किलोमीटर पर आवर. राइट, वही मतलब निकल रहा है. 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है. सो 10 किलोमीटर पर आवर इज द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट. इफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर. अब अपस्ट्रीम क्या होता है बोट? मतलब दैट इज स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. राइट, एस स्ट्रीम का खुद का स्पीड बोट के स्पीड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी मुझे अपस्ट्रीम स्पीड मिलेगा बोट का. तो मुझे ये बोल दिया गया कि स्ट्रीम का खुद का स्पीड इज़ 1.5 किलोमीटर्स. सो 10 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट minus 1.5, which implies speed of boat is equal to 11.5 kilometers per hour. This is my speed of boat in still water. This is speed of boat in still water. This is speed of boat in upstream. 1.5 is speed of the stream itself, and therefore downstream speed downstream speed of boat is speed of boat plus the speed of stream itself, that is 11.5 plus 1.5, that is 13 kilometer per hour. This is my downstream speed of the boat. Right, now it says that total distance covered by the boat when boat takes then find the total distance covered by the boat when boat takes 46 hours to travel from A to B then return to B. So there are 2 points A and B. बोट A से B जा रहा है फिर वापस आ रहा है. सो एक टाइम मान लेते हैं ये अपस्ट्रीम है, एक टाइम ये डाउनस्ट्रीम है. राइट, तो दोनों तरफ जाने के लिए उसका डिस्टेंस तो सेम ही है क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेरा सेम ही है D. अगर मेरा since if distance is constant, that means ratio of speed would be inverse of
द टाइम टेकन, अगर मुझे अपस्ट्रीम जाने के लिए टाइम यू लगा है और टाइम डाउनस्ट्रीम आने के लिए टाइम टी डी लगा है, दैट मीन्स speed upstream by speed downstream would be equal to time downstream td by t upstream, right? So t downstream by टाइम अपस्ट्रीम इज, मेरा अप स्पीड का स्ट्रीम अपस्ट्रीम बोट का स्पीड क्या है मेरा 10 kmph, डाउन स्पीड क्या है 13 kmph. So this is my ratio of the time. टोटल लगा है 46 आवर्स, राइट? हाँ, सो टोटल टाइम लगा है डाउन स्ट्रीम आने में जितना टाइम लगा है और अप स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगा है, टोटल मिला के मेरा 46 घंटे लगे हैं, वही बोल दिया है. टोटल टाइम इज़ 46 आवर्स. तो निकालना है क्या है मुझे, अपस्ट्रीम कंट्रोल इफ द स्पीड ऑफ बोट, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है. तो मुझे दोनों तरफ का स्पीड पता है, किसी भी एक तरफ का अगर मुझे टाइम मिल गया तो उसके स्पीड के साथ कैलकुलेट करके मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ. तो मुझे टाइम चाहिए, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालते हैं. डाउन स्ट्रीम का टाइम टी डी क्या होगा, अगर रेशियो 10:13 है तो मुझे इस 46 को 10:13 रेशियो में डिवाइड करना है. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, 10 बाई दोनों का सम रेशियो का, 10 + 13 इज़ 23 ऑफ 46 आवर्स टोटल का, इट इज़ 2, दैट इज़ 20 आवर्स, राइट? अगर ये 20 आवर्स है डाउनस्ट्रीम आने में, तो फिर अपस्ट्रीम जाने में उसको 46 माइनस 20, 46 माइनस 20 दैट इज़ 26 घंटे लगे हैं. एंड मेक सेंस, अपस्ट्रीम जाने में ज़्यादा टाइम लगा है, डाउनस्ट्रीम आने में कम टाइम लगा है. सो एंड आई नो दैट स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. सो मुझे डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से निकाल लेते हैं. डिस्टेंस वुड बी, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है मेरा, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज़ 13 into 20. So 13 into 2 is 26, 260 किलोमीटर्स. ये सिर्फ एक तरफ का डिस्टेंस है, इसने ये डिस्टेंस 2 बार कवर किया, एक बार गया है वापस भी आया है, तो उसका डबल डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया है. सो 2D वुड बी 2 into 260, दैट इज़ 520 किलोमीटर्स टोटल उसने कवर किया. दैट इज़ माई आंसर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन. Difference of interest received when a sum is invested at 15% per annum at simple interest for 2 years, and interest received when that sum is invested at 20% per annum for 1 year compounded half yearly is rupees 432. मान लेते उसने सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और 2 साल के लिए, तो हर साल उसको 15% मिला है. तो 15% पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट मिला है, दूसरे साल में भी उसको 15% मिला है. अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता तो उसको 15 रुपीज़ कितना मिला होता, 30 रुपीज़ उसको सिंपल इंटरेस्ट में मिला है. और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या किया है, उसने एक ही साल के लिए इन्वेस्ट किया है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली 20%. हाफ ईयरली बोला है तो हर 6 महीने में 10% हो जाएगा, वो 20% टोटल पर एनम का, 10% फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा. तो पहले 6 महीने में उसको मिला है, अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो पहले 6 महीने में फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ही हैज़ गॉट 10 रुपीज़, 10% ऑफ 100, 10 रुपीज़. और दूसरे 6 महीने में उसको फिर से 10% मिला है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो उसको 10 रुपीज़ तो मिला ही मिला है, लेकिन पिछले 6 महीने में जो 10 रुपया मिला था उस पर भी 10% इंटरेस्ट मिला है, दैट इज़ 1 रुपीज़. 10% ऑफ 10 इज़ 1. तो टोटल इसको कितना इंटरेस्ट मिला था कंपाउंड इंटरेस्ट में, 20 + 1 21. इन दोनों का डिफरेंस बोल दिया मेरा रुपीज़ 432.
डिफरेंस कितना है मेरा, सो 9, सो 9 यूनिट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू ₹432, 1 यूनिट कॉरस्पॉन्ड्स टू 432/9, और हमने टोटल इन्वेस्ट कितना किया था, 100 यूनिट्स, 100 units would be 432/9 into 100, right? 3 से 3, 3 से 144, 3 से 48, so ₹4,800 टोटल मैं इन्वेस्ट किया था उसने. नेक्स्ट क्वेश्चन. In an election, only two candidates participate. Candidate P got 50% less votes than Q. तो मान लेते हैं P has got 100 units vote and Q को P के रेस्पेक्ट में 50% कम मिला है, मतलब 50 यूनिट वोट मिला है. तो फिर दोनों को मिला के टोटल कितने वोट्स हुए, 150 वोट्स है टोटल मेरे, टोटल P और Q को मिला के. Had Q got 200 vote less, there would have been a tie. अगर Q को नहीं सॉरी मैंने गलत लिखा है थोड़ा सा. कैंडिडेट P गॉट 50% लेस वोट देन Q. सो Q को अगर 100 वोट्स मिले हैं तो P को 50 यूनिट वोट मिले हैं, दोनों को मिला के टोटल 150 यूनिट वोट मिले हैं. हैड Q गॉट 200 वोट लेस, तो Q को अगर मिले हैं अभी 100 यूनिट वोट्स, अगर उसको 200 कम वोट मिले होते हैं, दिस इज़ माई इन यूनिट्स, दिस इज़ इन माई एक्चुअल वोट नंबर, मेक द डिफरेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दिया है. अगर उसको 200 वोट कम मिले थे देन व्हाट ही हैज़ करेंटली गॉट, तो टाई होता, टाई होता मतलब दूसरे कैंडिडेट को जो 50 यूनिट्स वोट प्रेजेंटली मिले हैं वो, और ये बाकी 200 जन जिन्होंने क्यू को वोट नहीं दिया, वो किसी ना किसी इंसान को तो वोट देंगे, दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया है. यहाँ पे आ गया है वो, यहाँ पे ये 200 बंदे जो इसको वोट नहीं दिया है क्यू को, वो यहाँ पे पी पे आ गया, पी को वोट दिया है, राइट. तभी जाके दोनों का टाई हो गया, ऐसे ही बोला है क्वेश्चन में, इसीलिए इक्वल टू. ठीक है, तो फिर निकालते हैं. 100 यूनिट, यूनिट के साथ यूनिट ही मैं एल्जेब्रिकली सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, और एक्चुअल वोट्स के साथ एक्चुअल वोट्स को ही ऐड कर सकता हूँ. तो 100 यूनिट्स माइनस 50 यूनिट्स, दैट इज़ 50 यूनिट्स इज इक्वल टू 400 वोट्स. 50 यूनिट्स अगर 400 वोट है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, दैट मीन्स टोटल मेरे 150 यूनिट्स जो वोट थे वो एक्चुअली में कितने थे, 1200 वोट्स थे एक्चुअली में. मुझे पूछा है टोटल वोट का 8 टाइम्स कितना होगा, सो 1200 इंटू 8, 12 इंटू 8 इज़ 9600, दैट इज़ माई आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A pen was marked up by 50% above cost price. So let's say this is my cost price. उसने इस cost price के respect में 50% above cost price markup किया है. तो यहाँ से उसने प्लस 50% जंप दे के बढ़ा के मार्क प्राइस रखा है. ओके, एंड अलाउड ₹100 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस. उसने ₹100 का डिस्काउंट दिया है एंड इस पैसे पे उसने सेल किया है, दिस इज हिज सेलिंग प्राइस. 100 का डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस के ऊपर उसने 100 रुपये घटा दिया है और इस पैसे पे उसने बेचा है, सो दिस इज़ माई ₹100. एंड इफ़ शॉपकीपर स्टिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹100, शॉपकीपर ने फिर भी 100 रुपये डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट बनाया. प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से कितने ज़्यादा पे इट हैज़ बीन सोल्ड. सो कॉस्ट प्राइस से ₹100 ज़्यादा पे ही हैज़ सोल्ड द प्राइस इन सेलिंग प्राइस. दैट मीन्स ये टोटल मेरा कितना यूनिट है, कितना रुपीस है, सो 50% इज इक्विवेलेंट टू माई ₹200. यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 100 और ये 100. 50% अगर मेरा
is rupees 200. एक second, I should not say this in this language. I should say that 50% ये जो उसने जंप किया है, बढ़ाया है, वो एक्चुअली में कितना है, 200 रुपये बढ़ाया था, बट 50% किसके ऊपर था, सीपी के ऊपर. दैट मीन्स 50% ऑफ सीपी इज 200 rupees 200, which means cost price is equal to 200 into 100 by 50. जस्ट कट गया 2, दैट इज रुपीज़ 400. मेरा कॉस्ट प्राइस है 400. कॉस्ट प्राइस है 400. पूछा है मेरे से सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से 100 रुपीज़ ज़्यादा, सो 400 प्लस 100 दैट इज़ 500 rupees. That is my cost price, that is my selling price. This is my answer. See how easily this question can be done. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर करके कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट एग्ज़ाम में इफ़ यू आर हैबिचुएटेड विद दिस थिंकिंग स्टाइल कि ऐसे सोचना है, ऐसे डायग्राम बना के, तो ये चुटकियों में अंडर 30 सेकेंड्स किया जा सकता है. एंड कैलकुलेशंस आर ऑल्सो वेरी इजी अरिथमेटिक में यूजुअली. A container contain 120 liter mixture of milk and water. So milk, water, this is my total. 120 लीटर मिक्सचर है मेरा, उसमें से मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इन विच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ 20 लीटर. 20 लीटर अगर वाटर है तो 100 लीटर विल बी माई मिल्क. फिर इनका रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा मिल्क इज टू वाटर, निकालता हूँ 100 बाई 20 दैट इज़ 5:1 इज़ माई रेशियो. ठीक है. 36 लीटर मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम कंटेनर, क्या कैसे से मैंने सिखाया था पहले एट ए स्टेज. तो अगर ये मिक्सचर्स में से 36 लीटर निकाला गया है, तो इस जो निकाला गया है उसमें से भी इस रेशियो में मिक्सड रहेंगे मिल्क और वाटर. तो वाटर कितना निकला है, 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 6 पार्ट्स, 1 + 5 दैट इज 6 पार्ट्स. सो वाटर है मेरा 1 पार्ट आउट ऑफ 6 पार्ट ऑफ 36. इतना पानी निकला है, सो 6 दैट इज़ -6 लीटर, 6 लीटर निकाला गया है. और फिर अगर 36 में से 6 लीटर पानी था तो बाकी का 30 लीटर मिल्क होगा, 30 लीटर मिल्क निकाला गया. बचा कितना मेरा, और यहाँ पे 6 लीटर मिल्क एडेड, और ऊपर से यहाँ पे 6 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया गया है. तो फिर टोटल अभी नेट कितना रहा, 100 - 30 70, 70 + 6 इज़ 76 लीटर बचा, और पानी बचा यहाँ पे 20 - 6 14 लीटर. ठीक है. देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन व्हाट परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर. तो पानी कितना परसेंट कम है मिल्क से इन द फाइनल मिक्सचर, पानी कितना परसेंट कम है पूछा है. सो 14 - 76 final quantity of water in what percentage less than that of milk with respect to milk. So 40 - 76 by 76 into 100, that gives me approximately 62 by 76 into 100. इन नेगेटिव साइन को इग्नोर करो बिकॉज दिस जस्ट इंडिकेट कि पानी कम है विद रिस्पेक्ट टू मिल्क. सो आई नीड टू फाइंड दिस परसेंटेज बेसिकली. तो 62 कितना परसेंट होगा आउट ऑफ 76, तो 10% है मेरा 7.6 कॉरस्पॉन्ड टू 10%, राइट. 76 अगर 100% है तो 7.6 इज़ माई 10%. तो मुझे अगर मैं 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ तो 7 × 9 63 हो जाता है. मुझे चाहिए 62 को क्रॉस कर जा रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 7 × 8 इज़ 56 प्लस 0.6 × 8 विल गिव मी 2
to 4.8. So 6 into 8 is 48 point, so 4.8 will correspond to my 80%, or 60.8 is correspond to 80%. तो मुझे 80% में मुझे पहुंचना है 62 तक, बट 80% पे मैं 60.8 तक पहुंच गया, तो मेरा जो परसेंटेज है 62 आउट ऑफ 76 वो 80% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 80% में क्या क्या ऑप्शन है मेरा, 82, 88, 86 है, तो 88, 86 इतना ज़्यादा नहीं होगा। ऑलरेडी मैं 80% पे 60.8 तक पहुंच चुका हूँ, मुझे पहुंचना है 62 तक, मतलब 80% से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। दैट इज़ माई ओनली ऑप्शन, ऑप्शन ए, 82%। Let's do the next question. Pipe A and pipe B together can fill half of a tank in 7 hours. तो हाफ टैंक 7 घंटे में भर सकता है, तो फुल टैंक 14 घंटे में भर देगा भाई, दोनों मिलके। और सी कैन एम्प्टी 40% ऑफ द सेम टैंक इन एक्स आवर्स। तो 40% में वो 40% खाली में उसको एक्स घंटे लग रहे हैं, तो 1% खाली करने में उसको x बाई 40 आवर्स लगेंगे, और पूरा 100% खाली करने में, ये मैं सी का बात कर रहा हूँ, 100% खाली करने के लिए x बाई 40 इंटू 100 आवर्स लगेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड, 2 5 दैट इज़ 5x बाई 2 आवर्स। When all 3 pipes open together in the same empty tank, then it completely fills in 26 1 by 4 hours. Find the value of x. x का वैल्यू निकालना है हमें। कैसे करेंगे? तो हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसीज को कंपेयर करेंगे। तो ए और बी एफिशिएंट कितना है, 1/14 एफिशिएंसी है, और सी खाली कर रहा है, तो माइनस होगा, माइनस 1/5x/2, ये है मेरा 1 घंटे में जितना भर जाएगा। 26 1/4 को हम वैसे लिख सकते हैं 105/4, तो ये हो जाएगा 1/105/4। इसको हम लिख सकते हैं 1/14 माइनस 2/5x इज इक्वल टू 4/105। इसको सॉल्व करेंगे तो x विल बी 12। दैट्स माय आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ प्रेजेंट ऑफ ए एंड बी इज़ 30 ईयर्स। ठीक है, तो फिर a प्लस बी दोनों का प्रेजेंट एज का सम क्या होगा, 30 इंटू 2 दैट इज 60 ईयर्स। ये सम है a और b का प्रेजेंट में। c is 4 years older than a, so c is 4 years older than a, so a plus 4। 4 years ago, 4 साल पहले, रेशियो ऑफ एज ऑफ a, a 4 साल पहले कितने एज का था, a माइनस 4 टू सी, सी 4 साल पहले कितना था, सी का एज अभी a प्लस 4 माइनस 4 was 3:4, that is 3/4, which means a minus 4 by a is equal to 3/4, which means 4a minus 16 is equal to 3a, which implies a equal to 16 years, फिर c equal to 20 years, 16 plus 4, right? फिर प्रेजेंट एज का सम क्या है, a प्लस b प्लस c का, इज माई 60 plus 20, दैट इज
80 years क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ ए प्लस बी 5 years hence। तो ये मेरा प्रेजेंट में है। 5 साल बाद 5 साल बाद तीनों का एज 5 5 5 बढ़ जाएगा। सो +5 +5 +5 5 5 साल बढ़ जाएगा, मतलब टोटल में 15 साल बढ़ जाएंगे। सो 80 + 15 that is 95 years। That is your answer. Now I have solved all the arithmetic questions from SBI Clerk Prelims 2021 paper. Go through it, see how in shortcut we have solved all the question without using any formulas whatsoever. This was all the arithmetic questions. Now I'll solve some extra questions about which I have already taught in previously, just as a practice. Let's see this number series question. How to find the missing term. So not very big numbers. Let's start with just consecutive difference. So consecutive difference here is 2.5. 7.7 minus 2.7 is 5. Okay, so 2.5 into 2 gives me 5. Let's see this. 15.2 minus 7.7 is 7.5. Okay, again, so 5 plus 2.5 is again 7.5. तो S ratio में ऐसे चल रहा है. So this is my 2.5 into 1. This is 2.5 into 2. This is 2.5 into 3. So यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका और 15.2 का कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस होना चाहिए 2.5 into 4. 2.5 into 4 कितना होता है? 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2 into 4 2 5 into 2 10. So consecutive difference 10 होना चाहिए. So 15.2 plus 10 will give me 25.2. 25.2. That is my answer. Next question. Okay, there is a big jump. I can see by the end we have reached in thousands starting from 15. So there must be some kind of cubes or squares or multiplication of some sort. Okay. If multiplication is there, what I can clearly see is that 210 into 3 will give me 630 and 15 into 4 will give me 60. So what if let's try multiplying 3.5 with 60. Will it give me 210 or not? Let me check once. 60 into 3.5, because 3.5 is between 4 and 3. That is the logic it's going. Let's see. So 60 into 35 by 10, 0 0 6 6 into 6 into 5 3 0 6 into 3 18 plus 3 210. Yes, indeed I am getting 210. So 60 into 3.5, that means this multiplication factor is reducing by 0.5 0.54. आधा कम हुआ 3.5 3, then it must be 2.5 and this must be 2. So the missing number should be 1575 into 2. 1500 into 1500 into 2 is 3000 and 75 extra है. 75 into 2 is 150 to 3150. That is my answer. Let's do the next question. Not a big number, but I am seeing that once a number is increasing, then it is decreasing again. Then again it is increasing, then it is decreasing. So there can be some sort of alternating series. Let's see. Let's do the consecutive
subtraction consecutive difference first. So 49 minus 45 is 4, and 40 minus 49 is minus 9. Okay, perfect square, that is good. For 65 minus 40 is 25, again perfect square, that is good. And 16 minus 65 is 15 minus 49, okay, again perfect square. So 4 is 2 square, 9 is 3 square, 25 is 5 square, 49 is 7 square. So it is going in squares of prime numbers, with alternating plus and minus sign. So if this is minus, uh, whatever will be my next number, the consecutive difference with that should be, the next prime number is after 7, 11. 11 square, that is 121. So 16 plus 121 gives me 127, 137. 137, that is my answer. Yes, option A. Okay, next question. Okay, I am again noticing huge jump starting from 4, 9 up till 3000 plus. Must be some squares, cubes, or multiplication. Let's see. By analyzing the first three numbers, 4, 9, and 28, I am seeing that 9 is equal to 4 into 2, 8 plus 1, and 28 is equal to 9 into 3, 27 plus 1. So this number is increasing, 2, 3, and getting multiplied with the previous number. So the next, that is I need to find blank, would be 28 into 4 plus 1. Let me calculate this and see if I have an option for that or not. So 4 into 8, 3, 2, 4 into 2, 8 plus 3 is 11 plus 1, that is 113. Do I have an option? Yes, 113 is an option, so that is my answer. Next question. Okay, not very big numbers or big jumps. Let's see. Let's just take the consecutive difference first, and we'll figure out, since we have small numbers, it won't take much time to calculate the consecutive difference. So 30 minus 22 is 8, 41 minus 30 is 11, 56 minus 41 is 15. Okay, let's take double difference. 11 minus 8 is 3, 15 minus 11 is 4. Okay, so double difference is increasing by 1. So the next difference is going to be 5. So 15 plus 5, 20. So whatever be the number, that number minus 56 will give me 20. So that number would be 56 plus 20. 56 plus 20, that means 76. That is my answer. Yes. Okay. All these number series questions felt very easy this now. These are all from 2021 previous year questions. Just look how easy logics they are. Just by looking at the number carefully and thinking in the right track, that and judging by the size of the numbers, if multiplication is there or not, if squares, cubes are there or not, you can find out. And if nothing comes to mind, just do blankly consecutive difference and difference of consecutive difference, two stages of consecutive difference, then see. I'm sure you will find some pattern. Okay, let's do another question. So this is a paragraph information that is given to us, and followed by that we have 5 questions. So this is a very easy one with as respect to the other similarly data interpretation question that was present in the quant section of 2021, that
bar graph one and flat one. With respect to that, this is much easier. I'll show you why. Let's just create let's just read. The data given below shows the information of total students in class A, B and C, which are divided in three groups X, Y, Z. So A, B, C, three classes divided in X, Y and Z. Okay. Okay. A total number of students. A total number of students in class A. This is about class A. Total number of students are 90 in class A. Total number of students are 90. 30 students are in group X. So 30 students are in group X. So Y and Z में मिला के कितने students होंगे? 60 students there would be there in Y and Z combined. The ratio number of students in group Y and Z is 1:2. So I have to divide this 60 in the ratio 1:2 with the ratios given as in terms of Y:Z. Y:Z. So my Y would be 1 part out of 3. 1 part out of 1 plus 2, 3. So 1/3 of 60. 1/3 of 60, that is 20. This is 20, then this must be 40. Class B, total number of students are 80. Total number of students are 80. The ratio number of students in group X, Y, Z are 8:5:3. Okay, so in X, what do we have? 8 parts out of 8 plus 5. 8 plus 5 plus 3 gives us 16. So 8 by 16 of 80. So 16 into 5 is 80. 8 into 5, that is 40 students are there in X. In Y, 5 parts out of 16 of 80. Again 5, that gives me 25. So the remaining amount would be 40 plus 25 gives me 65, and total is 80, so remaining is 15 students. No need to calculate from ratio anymore if we have two values. Okay. That was for class B. And for class C, the number of students in group Y are half of that in group X. So if I have 2x student in group X of class C, in group Y we have only half of that, that is X. Okay, the number of students in group X of class C, the number of students of group X in class C, that is 2x, are 20 more than in group X of class A. Group X of class A, that is 30, which implies 2x equal to 50, x equal to 25. So here we have 50 students, here we have 25 students. Okay. Number of students in group Z of class C are 20% less than that in group X of same class. So 20% less bola hai, that means 80% is there. 80% of what? 20% less means 80% is remaining of that in group X of same class. Group X of class, same class means class C, group X of 50. So 52 to 40. So we have 40 students in groups in group Z of class C. Total students is 40 plus 50. 40 plus 50 is 90. 90 plus 20 is 110 plus 5 is 115. Okay. Let's see now, answer the question. What is the total number of students in group Y of all classes? Group Y of all class का total number of students क्या है? 25 25 50. 50 plus 20 is 70.
Number of students in group X of class B, group X of class B 40. uh, yeah, number of students in group X of class B, group X of class B is 40, are what percentage of number of students in group Y of class C, that is 25. Group Y of class A 25 into 100, 2500 is 4, 4 into 40 is 160, 160%. There are total 34 girls in class A. If 12 girls are in group X, then find the then find the number of boys in group Y and Z together. So there are total 34 girls in class A and only 12 girls are in class X. So the number of girls in Y and Z combined would be total minus number of girls in group X. That gives me 22 girls in Y plus Z combined. Y plus Z together. Y, there are 22 girls in combined Y plus Z together, and total number of students in Y plus Z is 20 plus 40, that is 60. This is total number of students of class A, Y plus Z combined. This is total number of students, and this many number of girls. So number of boys would be 60 minus 22, 40, 38 boys. 38 boys. Total number of students in group X is how much more or less than in group C? Total number of students in group X. Total number of students in group X is 50 plus 40, 90. 90 plus 30 is 120. Total number of students in group X is how much more or less than that in group C? How much students we have in group Z? 40 plus 40, 80. 80 plus 15 is 95. So 120 minus 95, that is 25. 25 students are more in group X. Find the respective ratio between average age of X in class A and B. Average students in group X of class A and B. उसका average क्या है? 30 plus 40 by 2, 70 by 2 is 35. To total number of students in class C. Class C का total number of students is 115. So my ratio is 35 by 115, and dividing by 5 gives me 7, dividing by 5 gives me 7 के साथ मेरा 2 ही रेशियो है, एंड 5 के साथ डिवाइड करेंगे 5 into 2 10 153 23. So 7:23. That's my answer. Hopefully. So do this question. Did it feel easier than the one that you did in the bar graph question? For me it was easier because calculation was less in that bar graph. Reading the numbers from the graph would take a lot of time, and converting it into the table, and calculation was all pretty simple. So hopefully this helps. Let me know how it helped you. Thank you.